we will discuss about the main excretory organ of the human body, that is kidney. So first of all, we will discuss about the location, shape, size and all these things about the kidneys. After that, we will come on to the external as well as internal structure of kidney. So let's start with the first. So we are talking about the kidneys. As we know that we have, or in the human body, the two kidneys are present, or the one pair kidneys are present. First of all, we will talk about their location, where the kidneys are located. The kidneys are located at the lower abdominal region in the posterior side of, or we can say at the both sides of spine. So it is located at the lower abdominal region, in the lower abdominal region. हमारे जो abdominal cavity होती है, abdominal region है, उसमें नीचे की तरफ लोअर साइड पे प्रेजेंट है, लोअर abdominal region में प्रेजेंट है किडनी at both sides of spine, at both sides of spine, spine की दोनों तरफ प्रेजेंट होगी. तो अगर हम किडनी की बात करें तो यहाँ हमारे फ्रंट में किडनी नहीं है, किडनी बैक साइड पे प्रेजेंट है at the both sides of spine. और अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रा इज प्रेजेंट up to the 12th thoracic vertebra, 12th thoracic vertebra से लेकर जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो हमारा है, लंबर वर्टिब्रा तक प्रेजेंट है हमारी किडनी. So it means we can say that 12th thoracic vertebra, then first lumbar, second lumbar and the third lumbar. इतने जो हमारे वर्टिब्रास हैं, इतने एरिया तक हमारी किडनी जो है वो प्रेजेंट रहती है. And this kidney is also get protected by the our two pairs of the floating ribs. जो हमारे floating ribs होती हैं, last pair floating ribs, they give protection to the kidney. The floating ribs give protection to the kidney. Protection देने का भी काम करेगी. Okay, this is about the location. अब अगर हम बात करें कि how they are situated, we have two kidneys, left and right kidneys. As in the previous video, I told you the right kidney is slightly lower. Right kidney is slightly lower than the left one. Is slightly lower than the left one. जब भी आप ड्रॉ करते हैं आप ये कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा मेजरेबल डिफरेंसेस नहीं है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होगी एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन. रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज एट द राइट साइड द लीवर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द लीवर, लार्ज लॉब ऑफ द लीवर इज प्रेजेंट देयर, सो राइट किडनी शिफ्टेड स्लाइटली एट द लोअर साइड, whereas left one is above to it. So ये बात हो गई लोकेशन की. अब अगर हम बात करते हैं शेप की, शेप ऑफ द किडनी, शेप ऑफ द किडनी, किडनी इज बीन शेप स्ट्रक्चर. इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप होती है और कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होगा. शेप के बाद साइज की अगर हम बात करें, व्हाट इज द साइज और द मेजरमेंट ऑफ द किडनी, किडनी इज द साइज ऑफ द किडनी इज 10 to 12 centimeter is length, it's the length of the kidney. Then 5 to 7 centimeter is the width of the kidney, and then we can write that 2 to 3 centimeter is the thickness of the kidney. The thickness कितनी मिल रही है हमें किडनी की, is 2 to 3 centimeter. So this is the measurement about the kidney. It's 10 to 12 centimeter length है, 5 to 7 centimeter तक की width है, जबकि 2 to 3 centimeter तक की thickness present है किडनी के अंदर. और अगर हम weight की बात करें, if we talk about the weight of the kidney also, the kidney has heavier in male as compared to female. मेल के अंदर जो किडनी का weight मिलता है, मेल के अंदर किडनी का जो हमें weight मिलेगा वो मिलेगा 120 to 170 gram. But this is the weight of the kidney. In the case of male, 120 to 170 gram, whereas in the case of female, the weight is 120 to 140 gram. So kidney is lighter in case of female as compared to male. तो यहाँ पे हमने location, shape, size और weight इन सब के बारे में बात कर ली है. Now we will discuss about the structure of the kidney. First we will discuss the external structure, then we will move on to the internal structure of the kidney. So let's see how the kidney is formed. So as we already told you that kidney is the bean shaped structure. So we are drawing this bean shaped structure. This bean shaped structure is the kidney. Here this is the opening part. So this bean shaped structure is the kidney. Now what is there?
In the kidney, we can see that at the one side of the kidney, it has one concave structure. Concavity is there, or one notch-like structure is there. This notch which is present at one side of the kidney is known as hilum. So this is the hilum. This is the hilum. And above the kidney, the gland, we know that adrenal gland, which is also known as suprarenal gland, will also be located there. तो वो भी यहाँ पे present होगी, but हम इसे यहाँ पे draw नहीं कर रहे हैं. You can keep remember that it's also present under both of these two kidneys. दोनों kidney पे present होती है adrenal gland. Adrenal gland is also present above the kidneys, and it's also known as suprarenal gland. Suprarenal gland. So this is called, this notch-like structure known as hilum. Now from this notch, some means structures, they are coming or going out. There are some structures which are coming or going out from this notch. Let's see what are these. So from this hilum, the first thing we can see that the renal artery is going inside the kidney through this hilum. So यहाँ पे हम दिखा सकते हैं that this is the renal artery. This renal arteries go inside the kidney through this notch, through this hilum. Second thing is the renal vein which comes out from the kidney through this notch. So इसके साथ ही हम यहाँ पे अगर दिखाएं the renal, through this renal through this hilum, the renal vein is coming out, and the third one, the nerves also come out. Nerves भी यहीं से बाहर आएंगी. And उसके अलावा अगर हम बात करें the ureters also open through this notch. यहीं से ureter से ही, यहाँ इस notch से ही ureters भी बाहर की तरफ open होंगे. So they will make a funnel shaped structure, and through this funnel shaped structure these ureters will open out. This funnel shaped structure known as renal pelvis. So ureters open out through the renal pelvis. renal pelvis के थ्रू जो ureters है वो भी बाहर की तरफ ओपन होंगे. This funnel shaped structure which is forming here is known as renal pelvis. This renal pelvis later on joined with the tube-like structure which become narrower at the lower part, which is known as ureter. So this is the one kidney. In the same way, the other kidney will have the same kind of structure. It will also have this notch, hilum. Through the hilum, renal artery, renal vein, and the ureters, they will come out from the kidney. So this is about the external structure. Besides this, if we talk about the covering, अब अगर हम covering की बात करें, how the kidney is covered? So kidney is covered by the different layers. Kidney पे बहुत सारी layers भी होती हैं जो उसको protection का काम करती हैं. The first one or the inner one is the tough fibrous coat. So first अगर हम बात करें सबसे पहले बाहर की तरफ और नहीं अंदर की तरफ, अगर हम अंदर से start कर रहे हैं, this is the outermost layer. This is the fibrous layer. It is the fibrous layer, or it's also known as fibrous capsule. It's in fibrous capsule. Which is this fibrous capsule? It's made up of white fibrous tissues. It's made up of white fibrous tissues. ये किससे मिलके बना है? ये white fibrous tissue से मिलके बना है, जो basically collagen proteins होते हैं, and they are tough. They provide protection to the kidney. So this is the one layer of the kidney which is made up of white fibrous capsule. Outside this fibrous capsule, the another layer is also present. एक और layer present रहेगी kidney के बाहर की तरफ. This layer is known as renal fat layer. Adipose tissues की बनी हुई renal fat layer है. This is the renal fat. It's also present. So second layer हम यहाँ पे लिखते हैं. This is the second layer. The second covering is the renal fat. It works as a shock absorber. So इसका function जो है वो shock absorber की तरह काम करने का है. इस absorber is provide protection against the mechanical shock. And the third one or the outermost is the renal fascia. The outermost is renal fascia. So एक और layer हम बाहर की तरफ दिखा रहे हैं. This is the renal fascia which is making the outermost covering. So these are the different layers which is present at the outside of the kidney. So first one, fibrous capsule. This is the first one, fibrous capsule, which is made up of white fibrous tissues. It provides protection because it's made up of collagen proteins, which is a tough protein or hard proteins. Second, renal fat layer, which is made up of adipose tissues. It's worked as a shock absorber. It provides protection against mechanical shock. And the outermost is renal fascia. Now, this is the external structure. यहाँ पे अभी हमने सिर्फ external structure की बात की है. अगर हम ये से हटा दें, तो then we can show the renal pelvis part clearly. So this funnel shaped structure is the renal pelvis.
which is opening out. This renal pelvis is open through the calyxes. यहाँ पे हमें कुछ ऐसे opening दिखाई देंगी, इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे when we study the internal structure. Through these renal the calyxes, this calyxes open into the renal pelvis. Then renal pelvis comes out through the funnel-shaped way and then it joins with the tube, which is known as ureter. So this is about the external structure. We will talk about the internal structure of the kidney. अब हम किडनी की अगर internal structure देखें, internally the kidney is divided into the two regions. The outer region, बाहर की तरफ का region जो होगा वो कहलाता है cortex region. Internally is divided into two regions. The one region is known as cortex and another inner side region is known as medulla. So inside kidney is also divided into the two regions, cortex and medulla. So we will discuss the internal structure of the longitudinal section of the kidney. Now we will discuss about the internal structure of the kidney. Here you can see in front of you, this is the LS or the longitudinal section of the kidney that you can see in front of you. Here you can see the kidney is divided into the two regions. The outer region is known as cortex, whereas the inner region is known as medulla. So outer part is the cortex part, और whereas inner part is known as medulla. So this central medulla part है जहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पिरामिड जैसी कॉनिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये वाली एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखी है. This type of structures they are found into the central medular region of the kidney. Almost 8 to 18 तक के इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे सकती हैं एक ह्यूमन की किडनी के अंदर, मैन की किडनी के अंदर हम कह सकते हैं. एंड दीज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दीज आर नॉन एज मेडुलरी पिरामिड्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज मेडुलरी पिरामिड्स. दीज मेडुलरी पिरामिड्स हैज ब्रॉडर पार्ट, वन पार्ट दैट इज द ब्रॉडर, जैसे कि आप देखते हो ये वाला पार्ट जो है ये ब्रॉड पार्ट है जो कि कॉर्टेक्स की तरफ है, वेयर एज वन पार्ट इज द नैरो एंड. दूसरा जो एंड होता है वो नैरो होता है जो अंदर की तरफ है, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड द रीनल पेल्विस. ये हम देख सकते हैं रीनल पेल्विस ये वाला रीजन है फनल शेप, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है. रीनल पेल्विस इज द रीजन थ्रू विच द यूरेटर्स जॉइंट्स, ये वो यूरेटर जहाँ से जॉइन हो रहा है. सो दिस इज द रीनल पेल्विस. तो अगर हम मेडुलरी पिरामिड्स की बात करें, मेडुलरी पिरामिड का जो ब्रॉड पार्ट है जो कि होता है कॉर्टेक्स की साइड, दैट इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द medullary pyramids, whereas the narrower part which is present toward the renal pelvis is known as renal papilla. इसे बोलते हैं renal papilla. So this narrow and कहलाएगा renal papilla. Now this renal papilla part जो pelvis की तरफ present है, this renal papilla opens into the structures or a cavity which is known as minor calyxes. देखो जिसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रिनल पेल्विस जो रीजन है ये ओपन हुआ है यहाँ पे माइनर कैलिक्स के अंदर. अगर हम इस रिनल पेपिला की बात करें, इट्स ओपन हेयर इन द माइनर कैलिक्स. दिस रिनल पेपिला इज ऑल्सो ओपनिंग हेयर इन द माइनर कैलिक्स. तो फाइनली what will happen, many minor calyxes which comes from the renal papilla they join together. So minor calyxes के बारे में हम कह सकते हैं almost 4 to 13 minor calyxes present होते हैं एक किडनी के अंदर, जो originate कहाँ से हुए हैं, बने कहाँ से हैं, they form through these renal papillas. renal papilla से form हो रहे हैं. renal papilla जो नीचे का narrow part है, यहाँ से minor calyxes open हो रहे हैं और 4 to 13 minor calyxes present रहेंगे in each human kidney. These minor calyxes they join together. यहाँ से minor calyx join हो रहा है, इसके यहाँ renal papilla से minor calyx join हो रहा है. Finally, this minor calyxes they join together to make a major calyxes. तो ये join होके क्या बनाएंगे? They will make the major calyxes. ये मेजर कैलेक्सिस फॉर्म करेगा. और मेजर कैलेक्सिस के नंबर की अगर हम बात करें, ईच मीन्स ऑल दिस माइनर कैलेक्सिस दे फर्दर जॉइन टू मेक 2 to 3, 2 से लेके 3 तक मेजर कैलेक्सिस हो सकते हैं. and these major calyxes they finally open into the renal pelvis. this funnel shape structure जो आपको funnel shape की structure दिखाई दे रही है किडनी से बाहर आते हुए, this is renal pelvis. and in this renal pelvis this major calyxis is open. and major calyxis किससे बना है? minor calyxis से. और minor calyxis कहाँ से आया है? renal papilla से. और यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में प्रेजेंस है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज विच आर नोन एज नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में ही सारा फंक्शंस किडनी का परफॉर्म हो रहा है, जो प्रेजेंट्स होती हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में. कुछ पार्ट्स कॉर्टेक्स रीजन में होगा, कुछ मेडुलरी रीजन में होगा. एंड दिस नेफ्रॉन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. नेफ्रॉन से फिल्टर होके यूरिन
रीनल पैपिला, रीनल पैपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर तक पहुंचता है एंड थ्रू यूरेटर इट गोज एंड स्टोर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ हमें देखनी है दैट यू कैन सी दिस, ये जो हमने देखे हैं मेडुलरी पिरामिड्स, जिन पिरामिड्स की हमने बात की थी, ये मेडुलरी पिरामिड्स है जो कि मेडुलर रीजन में है। इन बिटवीन ऑफ टू मेडुलरी पिरामिड्स, दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, दिस गैप विच इज फिल्ड बाय द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स विच प्रेजेंट इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट है। दिस कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला इज नॉन एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, और वी कैन कॉल देम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, इन्हें कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, इन्हें कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो इन रीजन्स का नाम क्या है? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। So you have to keep remember this extended part of the cortex which is present in between these medullary pyramids, these are known as columns of Bertini. So that's about the internal structure of the kidney. Now we will discuss about the internal structure of the nephrons. Nephrons which are the structural and functional unit. सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेसिक सारा फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है किडनी का, वो नेफ्रॉन रीजन में ही होगा। So we have to understand the internal structure of the nephrons and we'll discuss the types of nephron also in our coming videos.